Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about mental health nursing care plan, that is dissociative amnesia, and through this video you all learn this nursing care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में डिसएसोसिएटिव एमनेसिया के यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। नर्सिंग केयर प्लान फॉर द क्लाइंट विद डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। तो यहाँ पर देखते हैं डिसएसोसिएटिव एमनेसिया इज ए टाइप ऑफ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट वुड नॉट typically be lost with ordinary forgetting. It is usually caused by trauma or stress. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट फॉर डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर व्हेन आस्किंग about personal information, then client is unable to recall important personal information. And objective data होगा पर looking anxious, confusion, hopelessness. After writing these data we write the nursing diagnosis. तो पर nursing diagnosis देखते हैं। nursing diagnosis में लिखना है disturbed thought process related to severe psychological stress and repression of anxiety. गोल होगा client will recover deficit in memory. नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन। फर्स्ट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स फ्रॉम फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स इफ पॉसिबल। रेशनल होगा मीन्स रेशनल मीन्स व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन। रेशनल होगा इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव प्लान ऑफ केयर। इम्प्लीमेंटेशन द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा इन्फॉर्मेशन obtained about client from the family and significant other if possible. नंबर सेकंड देखते हैं do not ask client with data regarding his or her past life. रीजन होगा individual who are exposed to painful information from which the amnesia is providing protection may decompensate even further into a psychotic state. Implementation होगा avoid about the past life information. Number third, expose client to stimuli that represents pleasant experiences from past, such as enjoyable activities, beloved pets, music, etc. Reason होगा recall में occur during activities that stimulate life experiences. Implementation होगा exposed client to stimuli that represents pleasant experiences from past, such as enjoyable activities, beloved pets, music, etc. Number four देखते हैं as memory begins to return, engage client in activities that may provide additional stimulations. रीजन होगा enhance further recalling. Implementation में लिखना है as memory begins to return, engage client in activities that may provide additional stimulations. Number 5 देखते हैं encourage client to discuss situations that have been especially stressful and to explore the feelings associated with those times. Implementation होगा verbalization of feelings in non-threatening environment may help the client come to terms with unresolved issues that may be contributing to the dissociative process. Implementation में लिखना है client encouraged to discuss situations. Number 6 देखते हैं identify specific conflict that remain unresolved and assist client to identify possible solutions, provide instructions regarding more adaptive way to respond to anxiety. Reason होगा unless these underlying conflicts are resolved and any improvement in coping behaviors must be viewed as only temporary. Implementation में लिखना identified specific conflicts that remain unresolved and assisted client to identify possible solutions, provided instructions regarding more adaptive way to respond to anxiety.
आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवोल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं यहाँ पर तो एवोल्यूशन हो गया पर नाउ क्लाइंट रिकॉर्ड डेफिसिट मेमोरी। तो ये था हमारा केयर प्लान नंबर फर्स्ट फॉर डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। केयर प्लान नंबर सेकंड होगा पर पावरलेसनेस। तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान सेकंड में नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट verbalize about frustrations over lack of control and dependence on other। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर होगा इनएबिलिटी टू इनिशिएट प्लान और कंप्लीट एक्टिविटीज। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर पावरलेसनेस रिलेटेड टू inability to cope effectively with severe anxiety को होगा to maintain sense of hope, control and decision making। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट अलाउ क्लाइंट टू टेक एज मच एज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पॉसिबल फॉर ऑन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। रेशनल होगा प्रोवाइडिंग क्लाइंट विद चॉइसेस विल इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ कंट्रोल। इम्प्लीमेंट्स होगा क्लाइंट अलाउड टू टेक एज मच एज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पॉसिबल फॉर ऑन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। नंबर सेकंड प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर डिसीजन मेकिंग। रेशनल पॉजिटिव फीडबैक एनकरेजेस रिपीटिशन ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। इम्प्लीमेंटेशन में होगा पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइडेड फॉर डिसीजन मेकिंग। नंबर थर्ड असिस्ट क्लाइंट टू सेट रियलिस्टिक गोल फॉर फर्दर। डिसीजन होगा अनरियलिस्टिक गोल सेट क्लाइंट अप फॉर फेलियर एंड रिनफोर्स फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर client assisted to make realistic goals। Number fourth help client identify area of life situations that he or she can control। Reason होगा client's memory deficit may interfere with his or her ability to solve problem। Assistance is required to perceive the benefits and consequences of available alternative accurately। Implementation होगा help the client to identify area of life situations that he or she can control। Number fifth help client identify area of life situations that are not within his or her ability to control। Encourage verbalization of feelings related to this inability। This interventions help client learn to deal with unresolved issues and accept what can not be changed। Implementation होगा encourage verbalization of feelings। Number six identify way in which client can achieve encourage participation in these activities and provide a positive reinforcement for participation and for achievement। Reason होगा positive reinforcement and self esteem encourages repetition of desirable behavior। implementation होगा positive reinforcement provided। नंबर 7 देखते हैं encourage clients participation in supportive self help groups। reason होगा in support groups client can learn way to achieve greater control over his or her life situation through direct feedback and by hearing about the experiences of the other। implementation होगा encourage clients participation in supportive self help group। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड का एवेल्यूशन। तो हमको एवेल्यूशन में लिखना है सेंस ऑफ हॉप, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग मेंटेन। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो ये थे डिसएसोसिएटिव एमनेसिया की नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें हम यहाँ पर हमने टोटल 2 नर्सिंग केयर प्लान देखें। तो इससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।